Hello बच्चों, let us read the question. The question says, calculate the increase in the internal energy of 10 gram of water when it is heated from 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius and converted into steam at 100 kilopascal. The density of steam is given in the question 0.6 kg per meter cube. Specific heat of water is given 4200 joule per kg per centigrade, and latent heat of vaporization of water is also given 2.25 into 10 to the power 6 joule per kg. So आपको यहाँ पे जो निकालना है increase in internal energy. Increase in internal energy means we can find out like delta U. What is basically delta U, right? So यहाँ पे अगर हम देखेंगे, so if we start like, so we can write like from the first law of thermodynamics, we can say one thing like delta Q is equals to delta U plus del W. So first law से हम क्या कह सकते हैं? On the first leader से delta Q equals to delta U plus delta W. तो यहाँ से हम delta U निकाल लेंगे, delta Q minus del W. That we can say. So heat is basically supplied in the two process. हीट यहाँ पे जो है वो दो प्रोसेस में सप्लाई आपको हो रहा है. पहला प्रोसेस में क्या है कि 0 से 100 डिग्री सेल्सियस में जो हीट सप्लाई हो रहा है आपको, और दूसरा केस में क्या है कि आपको 100 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर जो आपका स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, राइट. सो बेसिकली यहाँ पे जो आपका टोटल हीट है ये आपका Q1 एंड Q2 पार्ट है. सो Q1 पार्ट में क्या है आपका 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड है, और यहाँ पे आपका क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड से लेके आपका 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस आपका वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. तो इसलिए इसके लिए हम क्या लगाते हैं Q1 के लिए. जब ऐसा होता है आपका Q1 इज to raise the temperature of water, basically this is of water from 0 to 100, and Q2 is to raise the temperature of not to raise, like it's actually phase is getting changed, कि आपका फेज यहाँ पे चेंज हो गया है, वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो गया है सेम टेम्परेचर पे, राइट. सो यहाँ पे हमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जरूरत पड़ती है. सो अगर हम इक्वेशन देखें, सो वी कैन कैलकुलेट लाइक डेल्टा Q1. So delta Q1 is basically your ms delta T, ms delta T, and mass is given in the question 10 grams, so that can be 0.01 into a specific heat of water for 200 into joule into 100. So delta Q1 आपका कितना आ गया फाइनली, you got it 4200 joule. Similarly, we can calculate like delta T. Similarly, we can calculate delta Q2. So delta Q2 अब जो है आपका वो क्या हो जाएगा, ये latent heat of evaporation का m into L हो जाएगा. So mass is already given again 0.01 into L कितना आपका हो गया 2.25 into 10 to the power 6 जूल पर kg, राइट. तो यहाँ से आपका डेल्टा Q2 निकल के आ जाएगा. दैट विल बी इक्वल्स टू बेसिकली 2500. So I think it should be 2500 or something around like 2250, राइट. यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे तो 225 ऑलरेडी आपका है, दो डेसिमल यहाँ से गया 4. सो इट्स 4 हुआ 225 है, दो डेसिमल में 4 चला गया, यहाँ 2 बचा तो 1 and 2. So we can note it like 22500. ओके, बेसिकली इस अमाउंट ऑफ एनर्जी का जूल आपके पास यहाँ पे है. सो नेट वर्क डन आपका जो यहाँ पे हो जाएगा, या टोटल हीट रिलीज जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 विच इज इक्वल्स टू, अगर दोनों को हम यहाँ पे ऐड करके देखें तो 2200 में 4200, इफ वी ऐड like 22500 plus 4200, that will be how much, like 0 0 5 2 7 5 and 2 is 7
4 and 2 is 6. This is 26700 joule. That is your total internal energy or total heat, right? तो यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें कि वर्क डन आपका जो होता है, लाइक योर वर्क डन इज बेसिकली डेल पीवी। तो आपका डेल डब्ल्यू जो यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज डेल डब्ल्यू इज योर बेसिकली डेल चेंज इन प्रेशर इनटू वॉल्यूम। सो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं P del V as the expansion occurs at constant pressure of 100 kilopascal. So initially we can assume that like volume of water will be negligible, right? Initially जो आपका है ये volume of water को हम negligible यहाँ पे consider कर सकते हैं। Volume of water जो आपका होगा that is volume of water is negligible. Volume of water is negligible. Is negligible, right? Volume of water will be negligible. So after the expansion into steam, its volume will become after the expansion into steam. After the expansion into steam, its volume will become like volume is mass into density, so that will become like 0.01 is the mass and density is already given in the question, it is 0.06, so which is approximately equals to 0.017 meter cube. So आपको यहाँ से अगर change in work done यहाँ से आपको निकालना है, so that change in work done can be your like 100 into 10 to the power 3 into 0.017, right? Work done क्या होता है P into PV. So your PV, that is pressure, is given here, pressure and volume, right? That is work done. Basically this is your work done. So pressure into volume is given. तो ये क्या हो जाएगा आपका, this is your pressure into volume. So if you calculate this, so I think this will come, this value will come after calculating 1700 joule you will get, right? So change in total energy जो आपका हो गया, so delta U from this equation you can see like we don't have here delta U, right? So delta U अगर हम देखें from the first equation, delta Q minus यहाँ से हमने पहले लिखा था delta Q minus delta W. So delta U is basically delta Q, and delta Q is your 26700, right? So delta U like del Q minus del W. So del U is basically 26700 joule. This is 26700 joule minus 1700. Okay, so that amount of internal energy is here. So 00 gone, 770 gone. If we look at the here 26700 is fine. So 770 gone, 6 minus 1 is 5. This is 25, right? So if we look at the options, like it is your that increase will be somehow like somehow will be x times of 100 increase in internal energy. So there will be somehow this is like equals to x times of 100. So this is actually given material increase. So del U is basically 250, that is equals to x into 10 square. So from here we can find it like x. So x we have is 250. So x is basically 250. So change in PV during the heating of water can be neglected as it is very small. So we can see like what is change. So change is basically 250 joule is a change, right? So this is basically 250 joule is a change. I hope you have understood it well. All the best.